Hello everyone, welcome back. Today we will discuss the remaining part of flower, that is floral parts, in detail. So let's start. Broadly, floral parts are divided into two categories. One is non-essential part, other is the essential parts. Non-essential parts include calyx. Its subunit is sepal. Subunit इसकी sepal होती है. Sepals constitute to form this calyx, and then corolla. So these two whorls of flower comes under non-essential parts. Then under essential parts, it includes the reproductive structures which are Androecium, which is the male reproductive structure, and Gynoecium, which is the female reproductive structure. So non-essential parts, calyx or corolla hai. They are usually meant for attracting the pollinators or protect the essential parts of the flower. So this animated photograph shows various whorls of the flower. This is the basal portion, which is known as pedicel, and the flower is known as pedicellate flower. And then at the tip of this pedicel there is a cup-like structure, जिसे कहा जाता है receptacle, और इसे कहा जाता है torus, और thalamus भी इसे कहा जाता है. It bears all the floral parts. So it bears all the floral parts. This flower consists of four whorls. The first whorl, that is the first layer, which consists of calyx made up of sepals. जब सभी sepals को combine करते हैं, so we use the term calyx. Then this outer leaf-like structure is known as calyx. It forms the first whorl. Then whorl number 2, which is formed by corolla. ये बनता है सभी के सभी petals से. Then comes the internal essential parts, which are formed by the stamens and the carpels. So whorl number 3 is formed by stamens, which are the male reproductive parts. It consists of filament. Filament से बना होता है, and it also contains the anther, which bears the pollen grains. जो pollen grains हैं वो anther के अंदर होते हैं. So these two structures combine to form stamens. Then comes the whorl number 4, which consists of carpel, which is the female reproductive structure. जो female reproductive parts हैं उन्हें कहा जाता है carpel. So it is made up of three things. One is ovary, which bears the ovule that finally forms the seeds. Then comes style. This portion, elongated portion, is known as style. Then comes the tip, which is known as stigma. It receives the pollen grains and helps in fertilization. At the base of this ovary, it bears ovules. So this is the floral description of various parts. ये जो four whorls हैं, ये flower को बनाते हैं. That flower is said to be complete flower, which contains all the four floral whorls. So part of flower, we will start with the outermost part, that is the calyx. It is formed by the sepals. So they constitute the lowermost accessory whorl. Accessory means helping whorl, or outermost series of green, flattened, or foliaceous. Foliaceous means leaf-like floral organs, which are mainly meant for protecting other floral parts. So इसका जो main function है, ये protect करता है सभी के सभी other floral parts को जो इसके अंदर lie करते हैं in the bud condition. So this green structure is known as sepal, और इसका main function होता है to protect the flower in bud condition. The sepals sometimes having color other than green, they are also colored. So at that condition, we use the term petaloid. So these sepals are said to be petaloid. For example, in this photograph, you can see here. So ये जो sepals हैं, they are colored pinkish in color. So ये जो term use करते हैं हम ऐसे sepals के लिए, we use the term petaloid. Next, the sepal which lies in line with the mother axis is called odd sepal. So ऐसे sepal जो mother axis के साथ lie करते हैं line में, उन्हें कहा जाता है odd sepal. It is anterior in family Leguminosae. ये anterior position पे होता है family Leguminosae में. For example, we have P, Acacia, and few others. So the sepal which lines with the mother axis is known as odd sepal, and it is anterior in the family Leguminosae. जो family Leguminosae उसकी anterior side में present होता है ये sepal.
मोस्टली इट इज़ पोस्टीरियर, जो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स है उसमें ये पोस्टीरियर होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव फ्लावर ऑफ पिटूनिया, सो दिस इज द फ्लावर ऑफ पिटूनिया. जो मदर एक्सिस के साथ वाला सेपल है इट इज़ पोस्टीरियर इन पोजिशन. Next, we use certain terms if the sepals are free or fused. If all the sepals are free, then we use the term polycephalous condition. So ऐसे flower जिनमें sepals fused नहीं होते हैं, that flower is said to be polycephalous flower. And the condition is known as polycephalous condition, and sepals are free. For example, in case of mustard, radish, this is the photograph which shows the flower of mustard जिसमें जो sepals हैं they are free from each other, एक दूसरे के साथ fused नहीं है, और इस condition को कहता है polycephalous condition. In another case, when the sepals are fused with each other, जब sepals fused होते हैं then we use the term gynocephalous condition, and the flower is said to be gynocephalous flower. For example, in case of cotton, datura and brinjal, this is the photograph which shows the brinjal, और इसमें जो sepals हैं ये fused हैं एक दूसरे के साथ, and this condition is known as gynocephalous condition. This is the flower of datura inoxia. datura है ये, इसमें जो sepals हैं they are also fused. So this condition is known as gynocephalous condition. Then we have one other plant which is known as mosenda. इसमें जो एक sepal है, one of the sepal that enlarges to form a leaf-like structure, जो कि bright in color होता है, that is not green in color, and it acts as advertisement flag. ये help करता है to attract pollinators. This is the photograph which shows the flower of mosenda. इसमें जो एक sepal है ये large size का होता है which becomes leaf-like structure, और ये help करता है to attract the pollinators. Calyx may be modified into spines in some plants. For example, we have fruit of trapa. इसमें जो calyx हैं, sepals हैं, वो spines में modify हो जाते हैं to protect the flower fruit of trapa. This is the fruit of trapa. और ये जो structures हैं, these are the modified sepals which are modified into spines. Calyx can be bilabiate. Bilabiate means two-lipped structure. और ये ऐसे calyx होते हैं salvia में present. Then, for example, we have flower of salvia. इसमें जो sepals हैं, they are bilipped. Then there are spurred. Spurred means इसमें एक और ज़्यादा sepals they are drawn out to form a beak-like structure, जिसमें beak bird की beak की तरह structure बनता है. That structure is known as spur. So वैसा structure बनता है by the modification of one or more sepals. In case of plant like larkspur, this is the photograph of this larkspur. इसमें जो एक sepal है modify होता है to form this beak-like structure जिसे कहा जाता है spur. Then it is also found in garden nasturtium. ये इस plant में भी present होता है. It is used as an ornamental plant. और in some cases जो sepals हैं they change into pappus. Pappus are modified hair-like structures, and this is found in the member of family Asteraceae. So this is the photograph which shows this pappus, और ये जो pappus है ये एक modified sepal है. These are hair-like structures, और इनका function होता है dispersal of seeds. जो seeds है उसके dispersal में help करते हैं. For example, it is found in case of Sonchus, which is the member of family Asteraceae. So next comes another structure which is known as apicalyx, और इसे hypocalyx भी कहा जाता है. Sometimes जो calyx है उसके बाहर एक और leaf-like structure present होता है, उसे कहा जाता है apicalyx. Api means upon, calyx means calyx. Calyx के बाहर एक और sepals की तरह structure present होता है जिसे कहा जाता है apicalyx. So it is an extra series of green sepal-like floral organs which lies outside of calyx. So this is the photograph which shows this structure. जो sepals हैं उनके बाहर और leaf की तरह structure present होता है जिन्हें कहा जाता है apicalyx. Apicalyx occur in some members of family Rosaceae. For example, strawberry में present होते हैं, and most of the Malvaceae member, for example, show flower, then Althea. In addition to this, it is also found in China rose, जो Hibiscus rosa sinensis है उसमें भी present होता है. It provides protection to the other floral organs like calyx. इसका काम होता है protection provide करने का to the floral organs like calyx. Next, duration of calyx के basis पे हम terms use करते हैं. So कितने time तक calyx रहता है, on the basis of its duration we use certain terms. For example, we have caducous sepals. Caducous sepals fall just after at the time of opening of flower. तो ये जो sepals हैं जैसे ही flower open होता है वैसे ही ये flowers sepals गिर जाते हैं. For example, in the
इन केस ऑफ प्लांट पॉपी, जो पॉपी है पापावर्स सोमनिफेरम, उसमें ये इस तरह के ये सेपल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कैडिकस सेपल्स. सो दिस इज द फोटोग्राफ एंड दीज आर द सेपल्स जो ऐसे जैसे फ्लावर ओपन होता है वैसे ही ये सेपल्स भी यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, दे फॉल डाउन, और इन्हें कहा जाता है कैडिकस सेपल्स. नेक्स्ट कम्स डेसिडियस. These sepal falls after pollination. जैसे pollination complete हो जाती है उसके बाद ये sepals गिर जाते हैं. For example, in case of mustard. So mustard के sepals after for pollination they get detached from the parent plant. Next comes third category, which is persistent. Persistent means they stay up to the maturity of flower. Sepals do not fall. ये जो sepals हैं गिरते नहीं हैं and remain attached to the fruit. और fruit और में attached रहते हैं. For example, in case of tomato, कैप्सिकम, ब्रिंजल, कॉटन एंड दतूरा, वी आर फैमिलियर विद दीज प्लांट्स, जिसमें हम देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. वी हैव टोमेटोज जिसमें सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, देयर परसिस्टेंट सेपल्स. दैन वी हैव ब्रिंजल, इसमें भी सेपल्स प्रेजेंट रहते हैं. सो दीज आर परसिस्टेंट सेपल्स. नेक्स्ट कम्स फंक्शन ऑफ कैलिक्स. कैलिक्स के फंक्शंस क्या हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. जो कैलिक्स है ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है इन बड कंडीशन. इन एडिशन टू दिस, जो सेपल्स हैं दे क्रिएट सम केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स, जो हर्बीवोरस से भी बचाते हैं प्लांट्स को, इंसेक्ट से भी प्रिवेंट, इंसेक्ट अटैक को प्रिवेंट करते हैं. सो इट सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड कंडीशन. सो बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं सेपल्स. हैव डिफेंसिव सेल्स इंक्लूडिंग हेयर्स, और ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ टॉक्सिक केमिकल्स जो डिफेंड करते हैं एसेंशियल वर्ल्स फ्रॉम एनिमल्स. जो एनिमल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर के एसेंशियल parts को. They are also green and photosynthetic and provide food for the developing flowers. So photosynthesis में भी ये हेल्प करते हैं. Some are petal like. कुछ एक जो sepals हैं petal की तरह होते हैं. We use the term petaloid for those sepals. And they helps in attracting the pollinators. So ये कुछ functions हैं. In brief, we can say these are some functions of calyx. Next part of flower is corolla, which is the second whorl of flower. और इसके जो सब यूनिट्स हैं they are petals, mostly bright colored होते हैं petals, and they constitute form this second whorl which is known as corolla. So they constitute the upper or inner series of accessory floral organs. ये भी accessory organ है flower का. This is non-essential part which are leaf-like, flattened but are brightly colored. ये brightly colored होता है in most of the cases to attract the pollinating animals or insects. Corolla with greenish tinge is known as saploid. इसके लिए हम use करते हैं term sapaloid petals. So in this photograph we can see here ऐसे कुछ petals होते हैं which are greenish in color, and that conditions we use the term sapaloid. Corolla में भी polypetalous, जैसा हमने sapal केस में पढ़ा था. Poly means free, और इसे कोरीपेटलस भी कहा जाता है. सो पेटल्स आर फ्री इन दिस कंडीशन. जो पेटल्स फ्री होते हैं, और इट कैन बी गैमोसेपलस. सो दिस इज द कंडीशन विच शोज फ्री पेटल्स. इसमें जो पेटल्स हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होती हैं. इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीपेटलस कंडीशन. बट व्हेन दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर टू फॉर्म कंबाइंड स्ट्रक्चर, जैसा कि इस केस में हम देख सकते हैं, सो दैट कंडीशन इज नोन एज गैमोपेटलस कंडीशन, और इसे सिम्पेटलस कंडीशन भी कहा जाता है व्हेन द पेटल्स आर फ्यूज्ड. जो पॉलीपेटलस करोला है, इट इज़ अ 4 मेन टाइप्स. पॉलीपेटलस करोला 4 डिफरेंट तरह का होता है. दैट विल डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड. पॉलीपेटलस करोला इज ऑफ 4 मेन टाइप्स. पॉलीपेटलस करोला मीन्स जिसमें पेटल्स फ्री होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज क्रूसीफॉर्म. एज द नेम इंडिकेट इट इज़ क्रॉस लाइक. इसमें जो पेटल्स की अरेंजमेंट होती है क्रॉस की तरह होती है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉड लिम्ब एंड अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे ये वाला डिस्टल एंड है इसका पेटल का, एंड दिस इज द लोअर एंड विच इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है क्लॉ. सो 4 क्लॉड और अंगिकुलेट, विच मीन्स विद प्रॉक्सिमल नैरो स्टॉक, और क्लॉ जो ये स्ट्रक्चर है, एंड अ ब्रॉड डिस्टल लिम्ब. सो ऐसे पेटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. दे आर अरेंज डायगनली अरेंज होते हैं लाइक अ क्रॉस. और इस तरह के करोला को कहा जाता है क्रूसीफॉर्म करोला. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ब्रासिका, दिस इज द फ्लावर ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. जो मस्टर्ड है उसका फ्लावर है ये. इसमें जो पेटल्स के अरेंजमेंट है
दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, जिसमें इसका लोअर एंड से क्लॉक आता है और ब्रॉडर इसका अपर पोर्शन है. सो दिस इज क्रूसीफॉर्म करोला, पॉलीपेटलस करोला है ये. दिस इज द अदर एग्जांपल ऑफ क्रूसीफॉर्म करोला. It is the corolla of radish. So it occurs in the family Brassicaceae, also known as crucifery. For example, mustard है, candy tuft है, that is Ibis amara. So इसमें ये radish है, इसमें इस तरह का corolla present होता है. Next is Caryophyllaceous Corolla. So this is the Caryophyllaceous Corolla, which is found in the member of family Caryophyllaceae. So it consists of 5 unguiculate or clawed petals with limbs horizontally bent. इसके limbs horizontally bent होते हैं, and it is found in the flowers. For example, we have pink, then carnation, which are the member of family Caryophyllaceae, जैसा कि हम इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं. 5 petals होते हैं, clawed हैं जो कि horizontally bent होते हैं. So इस तरह के Polypetlous Corolla को Caryophyllaceous Corolla कहा जाता है, and it is found in the member. Next, third type of Polypetlous Corolla is Rosaceous Corolla. इसमें जो petals होते हैं, they are 5 or more. They are sessile veins without stalk-like structure, shortly clawed petals bent horizontally like a saucer. So इसमें इस तरह के petals की arrangement होती हैं, free होते हैं petals. For example, we have rose. So इसमें जो petals का arrangement है, 5 हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा होते हैं mostly, और short clawed हैं या sessile होते हैं, means इसका जो lower portion है वो एबसेंट होता है या फिर पुअरली डेवलप्ड है, एंड इट फॉर्म्स लाइक अ सॉसर, एंड इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ रोज. द नेक्स्ट, द फोर्थ टाइप ऑफ Polypetlous Corolla is Papillonacious Corolla. It is found in the member of family Papilionaceae, which is the pea family, जो pea plant है. So 5 unequal or irregular petals are arranged like a butterfly. इसमें जो arrangement होती है flower petals की वो butterfly की तरह होती है. 5 unequal और irregular petals arrange होते हैं, and they gives the appearance of a butterfly. The posterior large bilobed petal को कहा जाता है standard और vexillum, और इस तरह की estivation हम पढ़ेंगे next. Vexillary estivation भी कहा जाता है. That posterior petal, which is bilobed, इसे कहा जाता है standard or vexillum. It overlaps the 2 smaller lateral petals named as wings or alae that we'll see in the diagram. So this one, जो ये वाला posterior petal है, ये 2 जो lateral petals हैं इनको cover करता है, जिन्हें कहा जाता है wings और alae, and this arrangement of petals gives the appearance of a butterfly. Then 2 later overlaps the 2 interior petals. जो ये 2 petals हैं, ये 2 anterior petals को overlap करती हैं, और ये जो anterior petals हैं, they are fused lightly by the upper anterior margins to form a boat shaped structure, जिसे कहा जाता है कील और carina. और ये जो anterior 2 petals हैं, ये fuse करके बनाती है एक structure जिसे कहा जाता है कील और carina. So this is the photograph which shows this arrangement of these 5 irregular petals which are of unequal size. So this posterior one is the standard, also known as vexillum भी कहा जाता है इसे. Then the 2 lateral wings, the 2 lateral petals are known as wings or alae. ये जो 2 lateral petals हैं इन्हें wings और alae कहा जाता है. Then there are जो ये 2 lateral petals हैं ये overlap करती हैं 2 anterior petals which are fused slightly from the anterior margin. यहाँ से fused होती हैं, and और इन्हें कहा जाता है कील और carina. So this is the arrangement of Papillonacious Corolla. और यहाँ पे हम इनको सेपरेटली देख सकते हैं. So this is the pea flower, जिसमें जो ये posterior petal है which is the standard, और इसको vexillum भी कहा जाता है. Then comes 2 lateral one जिन्हें wings और alae कहा जाता है. Then comes the 2 fused one जिन्हें कहा जाता है कील और carina. So this is the form of. Next comes Gamopetlous Corolla. Gamopetlous Corolla is formed by the fusion of petals. So ऐसे flower जिनमें petals fuse होते हैं उसे कहा जाता है Gamopetlous flower. After the fusion of petal, it gives rise to various shapes that we'll discuss one by one. First one is campanulate. It is bell-shaped or inverted cup-shaped structure. This is the photograph which shows this bell. और ये diagram है, animated diagram of this campanulate form.
of corolla. It is found in plant hair bell. So it is like a bell or inverted cup shaped structure. For example, in case of hair bell plant, this is the photograph which shows this campanulate corolla. Next is arceolate corolla. Arceolate corolla is urn shaped structure. This is the photograph which shows this structure urn. ये फोटोग्राफ है अर्न का. ऐसे जो करोला होते हैं विच इज़ अर्न शिप्ड, these are known as arcuate corollas. So urn shaped corolla are known as arcuate corollas. It is found in plant. For example, we have Arbutus, Cinedo, and Bryophyllum. So this is the photograph which shows this urn shaped corolla. And this is the photograph of Bryophyllum. Next comes salver shaped or hypocrateriform. ये होता है, this is the photograph which shows the salver. ऐसे जो करोला फ्यूजन के बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रॉम इट्स अपेक्स, इस तरह की शेप को बोला जाता है सैल्वर शेप्ड. सो ट्यूबुलर फ्लावर्स विद स्प्रेडिंग लोब्स. जो स्प्रेडिंग लोब्स हैं दे गिव राइज टू दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है सैल्वर. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ क्लीरोडेंड्रॉन, जो करोला है क्लीरोडेंड्रॉन का वो सैल्वर शेप्ड होता है. दिस इज द फोटोग्राफ. बेस इसका ट्यूबुलर होता है एंड फ्रॉम टिप इट इज सैल्वर शेप्ड. दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ क्लीरोडेंड्रॉन. Next comes infundibuliform. Infundibuliform corollas are funnel shaped corollas. So जैसी funnel की shape होती है वैसे जो corolla होते हैं उन्हें कहा था infundibuliform corollas. This is the photograph of lily and this is the photograph of petunia which is infundibuliform. So shaped like a funnel. ये जो corolla होते हैं funnel shaped के होते हैं. For example, in case of calla lilies and petunia, this is the photograph which shows this petunia. नेक्स्ट टाइप ऑफ गैमोपेटलस करोला इज ट्यूबुलर करोला. जो पेटल्स हैं वो फ्यूज करके बनाती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दैट वी कैन सी दिस फोटोग्राफ. इट इज अ फोटोग्राफ ऑफ आइक्रोमा साइनिया. सो इट इज़ अ ट्यूब लाइक करोला. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, जो डिस्क फ्लोरेट्स होती है सनफ्लावर की वो ट्यूबुलर होती हैं. दैट वी कैन सी दिस एनिमेटेड डायग्राम. नेक्स्ट कम्स रोटेट करोला. इट इज़ अ व्हील लाइक करोला. So it is a wheel-like corolla with unfused petal, but हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं fused petals, gamopetalous petals की बात कर रहे हैं. So that we can see in this photograph. It is a photograph of plumeria. जो plumeria plant है उसका जो flower है इसमें भी जो petals होते हैं fuse करके this rotate structure बनाते हैं जिसको wheel-like structure कहते हैं. It is with short tube having limbs placed transversely like a saucer or the spokes of a wheel. इसमें जो क्लॉज होते हैं इसके limbs होते हैं, they are placed like a saucer or the spokes of wheel. For example, in case of Solanum nigrum, Solanum nigrum, this is the photograph of Solanum nigrum. इसमें जो petals की arrangement है it is rotate or wheel like arrangement. Next comes bilabiate, means two-lipped structure of corolla. So this is the animated photograph. Labiate, bilabiate structure, two-lipped structure of mint flower. It is also found in the Osmium sanctum, which is Osmium sanctum is the common is the scientific name of Tulsi, then Salvia. So corolla is bilipped. The two lips may be open. दोनों open भी हो सकते हैं. Bilipped, then ringent. For example, in case of Salvia, or closed. This is bilabiate and personate. For example, in case of antirrhino, which is commonly known as dog flower. The mouth is closed by a projection of the lower lip called palate. जो माउथ है इस बाइलिप्ट का करोला का वो क्लोज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन प्रोजेक्शन जिसे कहा जाता है पैलेट. दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ साल्विया. बाइलिप्ट करोला है इसमें. एंड दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ एंटीराइनम. द नेक्स्ट टाइप ऑफ गैमोपेटलस करोला इज स्पर्ड करोला. स्पर्ड मीन्स बीक लाइक स्ट्रक्चर. इसमें एक या एक से ज़्यादा पेटल बीक की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ द लार्कस्पर विच इज़ नोन एज डेल्फिनियम. सो दिस द फोटोग्राफ. जो ये बीक की तरह स्ट्रक्चर है ये बनता है एक या एक से ज़्यादा पेटल से और इस तरह के करोला को कहा जाता है स्पर्ड करोला. वन और मोर पेटल आर ड्रॉन आउट लाइक अ बीक और स्पर लाइक स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लार्कस्पर जिसका बोटेनिकल नेम है डेल्फिनियम. सो दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ लाइनेरिया वल्गैरिस. इसमें भी बीक की तरह स्ट्रक्चर बनता है. नेक्स्ट इज डेल्फिनियम, द लार्कस्पर. नेक्स्ट टाइप ऑफ गैमोपेटलस करोला इज लिग्युलेट और स्ट्रैप शेप्ड करोला. ये पाया जाता है इन केस ऑफ रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर और इन द मेंबर ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी. इसमें जो
फ्लावर है, इसका लोअर पेटल है, इसका जो लोअर पोर्शन है इट फॉर्म्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और अपर पोर्शन विल फॉर्म द फ्लैट स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रैप की तरह स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रे फ्लोरेट, और इन दोनों के जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर. सो दिस टाइप ऑफ करोला इज नोन एज लिगुलेट और स्ट्रैप शेप्ड करोला. Corolla has a short and narrow tube below, नीचे की तरफ ट्यूब की तरफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बट इट इज एक्सपेंडेड लाइक अ स्ट्रैप, और अपर पोर्शन इसका एक्सपेंडेड होता है स्ट्रैप की तरह. एंड हेयर्स आर जनरली प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ यूनियन बिटवीन द टू. फॉर एग्जांपल रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. सो जो सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स हैं ये लिगुलेट टाइप ऑफ, इसमें प्रेजेंट होता है लिगुलेट टाइप ऑफ करोला. So this is the ray floret of sunflower, और ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो लोअर पोर्शन है, और इनके जंक्शन प्रेजेंट होते हैं लाइक स्ट्रक्चर दैट वी कैन सी इन दिस फोटोग्राफ. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज perianth. The term perianth is used when we are unable to distinguish between petals and sepals. तो एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस केस में हम यूज़ करते हैं term perianth. So when there is no distinction of sepals and petals, the non-essential floral organs are collectively known as perianth. जब हम differentiate नहीं कर पाते हैं sepals and petals में, then we use the collective term for both of these as perianth, and its individual unit is known as sepal. सो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सेपल्स और पेटल में डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, एक सिंगल ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है टेपल, और इस सब के यूनियन को कहा जाता है पेरियंथ. सो द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ पेरियंथ आर नोन एज टेपल्स. फॉर एग्जांपल दिस इज फाउंड इन केस ऑफ एस्फोडिलस, अनियन एंड लिली. एंड दीज में बी सेपलॉइड. ये जो टेपल्स हैं ये सेपलॉइड हो सकते हैं. सेपलॉइड टर्म हम तब यूज़ करते हैं व्हेन दे आर ग्रीनिश इन कलर. व्हेन दीज टेपल्स आर ग्रीनिश इन कलर देन वी term them as sepaloid or petaloid when they are brightly colored. So this is the photograph which shows these tepals, and collectively we call it as perianth. These tepals can be free or fused. If these tepals are free, means they are not fused with each other, then we use the term polyphyllous or also polytepalous term. So the flower is said to be polyphyllous or polytepalous. It means your tepals हैं they are free, they are not fused. And if these tepals are fused, then we use the term gamophilous or gamotepalous flower respectively. So this is all about the perianth. Next important term is estivation. Estivation is the arrangement of accessory floral parts like sepals and petals in relation to one another in the floral bud. जो floral bud है उसमें sepals और petals की कैसी arrangement है उसके लिए हम यूज़ करते हैं term estivation. So estivation is the arrangement of accessory floral organs, जिसमें आते हैं हमारे पास sepals और petals in relation to one another in the floral bud, and we use the term estivation for this arrangement. It is of following types. This is the animated diagrams which shows types of estivation. इसमें हम पढ़ेंगे velvet estivation, twisted estivation, imbricate, quincuncial, axillary estivation, one by one in detail. The first type of estivation is velvet estivation. In this type of estivation, the petals lie close to each other, but they do not overlap each other. जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे के पास लाई करते हैं बट वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं. सो इस तरह की एस्टिवेशन को कहा जाता है वेलवेट एस्टिवेशन. हम इसमें देख सकते हैं पेटल्स के बीच में गैप है थोड़ा सा, और वो एक दूसरे के पास लाई करते हैं बट दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर. सो मार्जिन्स ऑफ द एडजेसेंट पेटल आर नियर टू ईच अदर बट विदाउट ओवरलैपिंग, बट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव करोला ब्रासिका. ये एक और करोला है. इट इज़ द करोला ऑफ एनिसोडोंटिया कैपेंसिस, एंड दिस इज़ द फ्लावर ऑफ ब्रासिका. इन दिस वी कैन सी हेयर जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं,
एक दूसरे के पास हैं बट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती. So this type of estivation or arrangement of petals or sepal is known as velvet estivation. Next comes twisted or contorted estivation. In this type of estivation जो पेटल का एक एंड है वो दूसरे को ओवरलैप करता है. सभी के सभी जो पेटल्स हैं उनका एक एंड दूसरे पेटल्स को ओवरलैप करता है. सो इस तरह की जो एस्टिवेशन है उसे कहा जाता है twisted estivation or contorted estivation. One margin of a petal overlaps regularly the margins of an adjacent petal, the other margin being overlapped by the margin of another adjacent petal. So this type of estivation is known as twisted or contorted estivation. It is found in the corolla of China rose. That is hibiscus sinensis. के अलावा ये present होता है Abelmiscus esculentus जो लेडी फिंगर है उसमें भी इसी तरह की एस्टिवेशन होती है. दिस इज चाइना रोज. इसमें हम देख सकते हैं जो पेटल है इसका एक एंड दूसरे पेटल को ओवरलैप करता है. देन द नेक्स्ट पेटल ओवरलैप्स द अनदर एज ऑफ द एडजेसेंट पेटल. सो इस तरह की जो एस्टिवेशन है उसे कहा जाता है ट्विस्टेड और कॉन्टॉर्टेड एस्टिवेशन. नेक्स्ट कम्स इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. there is an irregular overlapping of petals by one another. इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है ओवरलैपिंग का, ये इरेगुलर पैटर्न होता है और इसे कहा जाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन वन पेटल इज कम्प्लीटली इनसाइड. एक जो पेटल है वो कम्प्लीटली इनसाइड होगा एंड वन इज कम्प्लीटली आउटसाइड. सो इन दिस फोटोग्राफ वी कैन एनिमेटेड डायग्राम वी कैन सी हियर जो एक पेटल है वो कम्प्लीटली अंदर की तरफ है और एक जो पेटल है वो कम्प्लीटली बाहर है और जो नेक्स्ट 3 रिमेनिंग पेटल्स हैं वो ट्विस्टेड की तरह अरेंजमेंट है. मीन्स उनका एक एज दूसरे पेटल्स को जिसमें पेटल को ओवरलैप कर रहा है. इस तरह की एस्टिवेशन कहा जाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. द रिमेनिंग पेटल्स शो वन एज इनसाइड एंड द अदर एज आउटसाइड and are divided into 2 types of imbricate estivation, that is descending imbricate estivation and ascending imbricate. So दो तरह की होती है imbricate estivation. One is ascending imbricate और second one is descending imbricate. The example is gulmohar, that is Telanix regia and Acacia. So इन दोनों plants के flower में petals की arrangement imbricate होती है. It has 3 subtypes beside the imbricate proper. 3 subtypes हैं इसके. This is the first one, that is quincuncial. इसमें जो 2 petals होते हैं they are external, that we can see here. 2 petals external होते हैं, बाहर होते हैं complete, and 2 are internal. 2 internal होते हैं, these 2 are internal, and 5th with 1 margin external. जो 5th petal है उसका एक margin बाहर की तरफ होगा, that we can see in this डायग्राम, और एक इसका एंड अंदर की तरफ होगा. इस तरह की एस्टिवेशन कहा जाता है quincuncial estivation. Here 2 petals are external, 2 are internal, and 5th with 1 margin external while its one other margin is internal. This type of estivation is known as quincuncial estivation. The next type of imbricate estivation is ascending imbricate estivation. In this type of estivation, posterior petal is being overlapped by 2 lateral buds, that we can see in this diagram. जो posterior petal है इसको 2 lateral petals overlap करते हैं while they are being overlapped by the 2 anterior petals. और ये जो lateral petals हैं इनको further 2 anterior petals overlap करते हैं. And this type of estivation is known as ascending imbricate estivation. It is found in the flower of Acacia and its vernacular name is Amalthus, and gulmohar, its botanical name is Telanix regia. This is the flower of Acacia fistula, and this is the flower of Telanix regia. The next type of imbricate estivation is descending imbricate estivation or axillary estivation. In this type of estivation, the posterior petal overlaps the 2 lateral petals, and these 2 lateral petals further overlaps the 2 anterior petals, and this type of estivation is known as descending imbricate estivation. It is found in case of P. In this case, posterior petal overlapping the 2 lateral petals. जो posterior petal है ये overlap करता है 2 lateral petals को. The latter
ओवरलैपिंग द टू इंटीरियर पेटल्स, और ये जो लेटरल पेटल्स हैं ये फर्दर ओवरलैप करती हैं दो एंटीरियर पेटल्स को, एंड दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज descending imbricate estivation or axillary estivation. It is found in case of P, and this type of corolla is also known as Papillonacious type of corolla. So this is the Papillonacious corolla which is found in case of P. इसमें जो बड़ा posterior petal है इसे कहा था stander or maxillum, then two lateral, जो दो lateral है इन्हें कहा था wings, और जो further anterior two fused petals हैं उन्हें कहा था keel और keel. So in this photograph we can see here, अगर हम इसके petals को separate करें, so we will see this posterior larger petal which is known as maxillum, then the two lateral petals which are known as alae or wings, and the two interior ones which are fused from their interior margin, जिसे कहा जाता है carina और keel भी इसे कहा जाता है. And this type of corolla is known as Papillonacious corolla, and it shows the descending imbricate estivation. Next comes the essential whorl's first part, that is stamen, or it is also known as Androecium. The collective term used for stamen is Androecium. It represents the male reproductive structure in case of plants. A stamen or a male reproductive organ is represented by Androecium. It consists of two parts. One stamen consists of two parts: a stalk-like structure which is known as filament, जिसे filament कहा जाता है, and a knob-like terminal portion which is known as anther. उसे कहा जाता है anther. It bears the anther lobes which will bear the pollen sacs, and these pollen chambers will bear the pollen grains, which are the male reproductive structures. So this is the structure photograph which shows these structures which are known as anthers. This is the terminal portion, and this stalk-like structure is known as filament. This is known as filament, and this is known as anther. Each anther has two lobes. हर एक जो anther है उसके दो lobes होते हैं which are attached at the back by a sterile band, जिसे कहा जाता है connective. जो दो anther lobes हैं they are joined together by a cementing material, जिससे कहा जाता है connective. This is the anther and this is the filament, और इसके बीच में present होता है structure. For example, this is the photograph which shows this structure which joins the two lobes of anther, जिसे कहा जाता है connective. So this is the adaxial view and this is the abaxial view. In this view we can see here जो ये बीच का portion है जो दो anther lobes को connect करता है, this is known as connective. This structure is known as connective. A slight enlargement separates two anther lobes to make divergent. In case of petunia, जो anther lobes हैं वो थोड़े से एक दूसरे से separate हो जाते हैं, which represents the diversion. Means एक दो में divert हो जाता है. This is the photograph which shows the anther of petunia which shows certain divergence. Means दो में bifurcate हो जाता है anther इसके lobes. In case of salvia, which is a bilabiate flower, bilabiate flower है ये, corolla इसमें present होता है. इसमें जो connective present होता है, connective is the cementing material which joins the two anther lobes. It is highly elongated, जिसे distractile connective भी कहा जाता है. इसमें एक end में it bears the fertile anther lobe, and while the other end bears the sterile anther lobe. And here connective forms a special mechanism जिसे कहा जाता है lever mechanism with the filament, and it helps in dispersal of pollen grains with the help of insects. So this is the flower of salvia. इसमें जो एक anther lobe है ये fertile होता है, और जो इसका दूसरा anther lobe होता है that is sterile. So this is an animated diagram which shows this half flower of salvia. इसमें हम देख सकते हैं जो एक anther lobe है इसका ये fertile होता है, while जो second anther lobe है it is sterile, और इसके बीच में present होता है elongated connective, and it forms the lever mechanism. When insect visit the flower, it pushes this sterile staminode, और जो fertile anther lobe है it touches the back of insect and dusts the pollen grains on the back of insect. It helps in dispersal of pollen grains through the agency of insects, which is known as entomophily. And in viola, the stamens are spurred.
means beak-like stamens are present in case of viola. And the term used for sterile undeveloped stamen is staminode. इसके लिए हम जो term use करते हैं, जो sterile undeveloped stamens हैं, we call them as staminodes. So this is the spurred lowest. This is the stamen of viola, which is spurred. It is not clearly visible, but in case of viola, it is spurred stamen. When two anther lobes are present, then we use the term for stamen as bithecous stamen. दो anther lobes जो present होते हैं, so उसके लिए हम term use करते हैं bithecous stamens. For example, we have this one. ये जो anther है, इसमें दो lobes present हैं और इस तरह के stamen को कहा जाता है bithecous stamen. When there is single lobe, एक single lobe present होगा, उस तरह के stamen को कहा जाता है monothecous stamen. And this type of stamen is found in the flowers of members of family Malvaceae. For example, we have Althea, China rose, shoe flower. So this is the China rose flower. इसमें जो anthers होते हैं, they are monothecous, single lobe present होता है, और सारे के सारे जो anthers हैं, they are fused to form one single bundle, जिसे कहा जाता है monoadelphous condition, that we'll discuss in upcoming slide. And each fertile anther lobe contains two pollen sacs or chambers. हर एक जो anther lobe होता है उसमें दो pollen chambers present होते हैं. And flowers in which stamens are shorter than the flower, it is termed as inserted flower. जिसमें जो stamens हैं flower से height में कम रहते हैं, they are inserted stamens. When the stamens protrudes out, they are termed as exerted. For example, in this case, जो stamens हैं ये flower के बाहर आते हैं, then we use the term exerted. Stamens may be borne directly on the thalamus or may be fused with the petals. If the stamens are fused with petal, then we use the term epipetless. So that condition is known as Epipetless Condition, for example, in case of Solanum and Petunia flower. If the stamens are fused with tepals, I have used this term when we use this term when we are not able to distinguish between petals and sepals, then we use the term perianth and its subunit is tepal. If stamens are fused with tepals, then we use the term Epipetless Condition or Epipetless Condition, for example, in case of Asphodilus. So this is the flower in which the stamens are fused with the petal, and this condition is known as Epipetless Condition. Condition of attachment of stamens with pistil is called Gynoecium condition. When the stamens are fused with the pistil or carpel, then we use the term Gynoecium flower or Gynoecium condition. It is found in case of Calotropis. It is a xerophilic plant. इसमें इस तरह की condition present होती है. This is the structure which is formed by the fusion of stamens and the carpel. So ये दोनों ही fuse होकर एक structure बनाते हैं जिसे बोलते हैं, this condition को बोलते हैं Gynoecium condition, and it is found in case of Calotropis flower. Then fusion with a dissimilar organ is called adhesion. जब dissimilar organ means जब anther fuse करते हैं carpel के साथ, either petals के साथ, sepals के साथ, then we use the term adhesion for that condition. And while the fusion with the similar organ is known as cohesion. जो similar organ है, for example anther के साथ fused हैं, stamen के साथ fused, then we use the term cohesion. The free stamens, when the stamens are free, means they are not fused, then we use the term polyandrous condition. So that condition is known as polyandrous condition, and the flower is polyandrous flower. For example, in this case, जो stamens हैं ये तो एक दूसरे के साथ fused नहीं है, they are free from one another, और किसी भी floral part के साथ fused नहीं है, they born on the thalamus, and they are free. That condition is known as polyandrous condition. They may be equal or unequal in length. Length इनकी vary कर सकती है. The two common types of unequal stamens are first one is Tetradidymus, जिसमें चार long stamens present होते हैं and two are shorter. For example, in case of mustard, and this condition is known as Tetradidymus condition, in which there are total 6 stamens. Out of 6, 4 are long and 2 are shorter. And second condition is Didymus condition. In this condition, 2 stamens are long and 2 are short, and this condition is found in case of Ocimum or Oncium sanctum. So this is the
photograph which shows Tetradienous condition. इसमें जो 4 stamens होते हैं they are longer in length. अंदर वाले 4 stamens they are longer in length and outer 2 are smaller in length. और इस तरह के condition को कहता है Tetradienous condition. Then we have Linearia flower which shows Didynamous condition. Stamens, इसमें 2 long stamens present होते हैं and 2 are shorter stamens, and similar cases found in case of Osmium. So these are some terms used in with. Next comes the cohesion between stamens is of 3 types. जो cohesion है stamens के बीच में means आपस में ये fused होते हैं. It is of 3 types. And the term used for this is adelphous. The stamens are fused by their filaments only, and we use the term adelphous. The anthers are free. Fusion of filaments may produce a single group, that is known as monoadelphous condition that we have already discussed. It is found in case of China rose and Althea. This is the flower. इसमें जो filaments हैं stamens के वो fuse करके एक ही bundle बनाते हैं, and this single bundle is termed as monoadelphous. And this condition is known as monoadelphous condition. If these filaments fuse to form 2 groups or 2 bundles, then we use the term diadelphous condition. It is found in case of P, that is Pisum sativum. In this case, the total number of stamens are 10, out of which 9 are fused to form a single bundle and 1 is free, so it represents 2 bundles, and this condition is known as diadelphous condition. Or there may be fusion of filaments to form many bundles or many groups, and that condition is known as polyadelphous condition. It is found in case of citrus. This is the flower of citrus. इसमें जो filaments होते हैं anthers stamens के वो fuse करके एक 2 से ज़्यादा bundles बनाते हैं, that we can see in this photograph. और इस तरह के fusion को कहते हैं polyadelphous condition when forms more than 2 bundles, and this is found typically in citrus flower. It shows next condition of fusion of stamens. The term used is syngenesious or synanthers condition. Syn means fusion, anthers means anthers. When only anthers are fused in the stamen and the filaments are free, that condition is known as synanthers condition or syngenesious condition. The fused anther form a ring around the gynoecium. इसमें जो anthers fuse होते हैं they form a ring around the gynoecium. For example, in case of sunflower. Sunflower के केस में ये condition present होती है. इसमें जो anthers हैं वो fused होते हैं और जो filaments हैं they are free, and they form a ring around the gynoecium. While the second condition is synandrous condition. इसमें जो anthers हैं वो भी fused होते हैं और जो filaments हैं वो भी fused होते हैं. This condition is known as synandrous condition. Here stamens are fused by both their filaments as well as by their anthers. So इस तरह की condition को कहा जाता है synandrous condition, and it is found in case of cucurbita flower. So this is the cucurbita flower. इसमें हम देख सकते हैं जो anthers हैं they are fused and the filaments are also fused, and this condition is known as synandrous condition when both filaments as well as anthers are fused. So we use the term synandrous condition. Next comes fixation of anthers to the filament. So जो fixation होती है anther की filament से ये vary करती है. It shows variation and we use certain terms for them. The first one is basifixed or innate condition. In this condition, as the name indicate, the filament is present at the base of anthers, and we can say the anther is fixed directly at the top of filament. जो filament है उसके top में present होता है anther, and this type of condition is not found in case of mustard and radish flower. These are the animated diagrams. This is the basifix condition. इसमें जो filament होता है it is directly attached to the base of anther, or we can say the anther is present at the top of filament. Next is adnate condition. In adnate condition, this filament runs throughout the length of anther, or it is directly in contact with connective. The filament runs throughout the length of anther or becomes continuous with the connective. For example, in case of ranunculus, magnolia, nymphea, and water lily flower bear such type of anther fixation. Next is dorsifix condition. इसमें जो filament होता है it is directly attached to the back of anthers. So the filament is firmly fixed to the back of anthers, for example in case of passiflora, sesbania, and prunus flowers. Next is versatile condition.
In this type of fixation, the filament is attached generally to the back of anther, similar to Dorsifix condition, and the anther can swim freely. इसमें जो anthers है वो freely swim कर सकते हैं. They are larger in length, longer in length we can say, और ये freely swim करते हैं air में. And this type of condition is known as versatile condition. Next is divergent condition. In this condition जो filament है ये bifurcate हो जाता है to form two branchlets, and each will one bear anther lobe, और ये हम पढ़ चुके हैं in case of petunia. Next is distractile condition, or this is also known as this is found in case of salvia. इसमें जो connective होता है that is longer in length, elongated होता है. इसमें एक anther sterile होता है और दूसरा fertile होता है, and it shows lever mechanism क्योंकि जो connective होता है बहुत लंबा होता है. And this condition is known as distractile condition that we have already discussed in case of salvia. Next is dehiscence of anthers. Dehiscence means how anther releases the pollen grains from pollen chambers. So that process of release of pollen grains from anther is known as dehiscence. So there are various methods in which anther dehisce to expose the pollen grains by the following methods. So there are a lot of methods. The first one is longitudinal dehiscence. In this type of dehiscence of anther, long slit appear lengthwise. एक long crack appear होता है lengthwise in the anther lobes, and this occurs in case of mustard, datura, ranunculus, and citrus. So these are the plants in which anther shows longitudinal dehiscence. Next comes longitudinal dehiscence is of three types. Mainly तीन तरह का होता है longitudinal dehiscence. First one is introse longitudinal dehiscence. In this type, slit are formed towards the inner side or center of the flower. इसमें जो slits बनती है means cracks बनते हैं anther lobes में. They are formed inner side or center of the flower. These are the diagrams. Towards inner side जो cracks हैं वो बनते हैं in the towards center of flower, और फिर pollen grains release होते हैं. And this type of dehiscence is known as introse longitudinal dehiscence. Next type is laterose or lateral dehiscence, longitudinal dehiscence. In this type of dehiscence, slit appear on the sides. जो lateral sides हैं वहाँ पे slits appear होते हैं, that we can see in this diagram. जो anther lobes में slits appear हो रहे हैं, cracks appear हो रहे हैं, they are on the lateral side, longitudinal lateral side में appear होते हैं. And this type of dehiscence is known as laterose longitudinal dehiscence. And third one is the extrose longitudinal dehiscence. In this type, slits lies towards the outer side of the petal. जो slits हैं वो lie करते हैं towards the outer side of the petal. Petal के बाहर की side में present होते हैं slits, और वहाँ से pollen grains release होते हैं. This is extrose longitudinal dehiscence. Next comes transverse dehiscence. In this type, anther lobes burst by a slit. जो anther lobes crack हो जाते हैं by a slit, breadthwise roughly in the middle. जो middle portion है वहाँ पे एक slit appear होता है. For example, in case of ladyfinger, it's a member of family Malvaceae, and its botanical name is Abelmuscus esculentus. Then Malva and Althea. So these plants bear anthers which show transverse dehiscence. So in this case, in transverse dehiscence, transverse slit appear in the middle of anther lobe, और वहाँ से pollen grains release होते हैं. This type of dehiscence is known as transverse dehiscence. Second is next type is porous dehiscence. In this type of dehiscence, anther lobes dehisce by pores which appear at the tips. जो pores हैं वो tip में भी appear हो सकते हैं. For example, in case of Solanum tomato, or at the base, और base में भी pores appear हो सकते हैं. For example, in case of Acacia, और वहाँ से anther lobe से pollen grains release होते हैं. And this type of release of pollen dehiscence is known as porous dehiscence. Next comes valvular dehiscence. In this type of dehiscence, जो walls हैं anther की, anther lobes breaks at various places and gets lifted. और जो break होते हैं pieces वो lift हो जाते हैं like valves that we can see in this diagram. जो breakdown हो जाते हैं anther lobes बाहर से वो lift हो जाते हैं to form this slit like structure or cover valve like structure. Valve की तरह structure बनता है और यहाँ से pollen grains बाहर release होते हैं. And these valves expose
the pollen grains, and this is found in case of camphor and barberry. Then the last type of dehiscence is irregular dehiscence of anthers. In this type, anther wall breaks irregularly. कोई definite pattern show नहीं करता है ये breakdown का anther wall का to expose the pollen grains, और pollen grains randomly expose होते हैं. For example, in case of najas. So these are the various types of anther dehiscence. The next important essential word is carpels, which combine to form the female reproductive structure, which is known as gynoecium. So it represents the female reproductive structure in case of plants. It's the female part of flower which develops from the central region of the thalamus. So center जो region central region होता है thalamus का, वहाँ से ये arise होता है, and it represents the female part of the flower. In this photograph we can see here. So this is the gynoecium, which occupies the central part of the flower, which arises from the thalamus. And this is the enlarged photograph of this carpel. It consists of three parts. One is the basal swollen portion, which is a flask-shaped structure, जिसे कहा जाता है ovary. Then the upper portion, elongated portion. This portion is known as style. Then the upper tip, which is known as stigma, and it is the surface which receives the pollen grains. A flower may have one or more carpels. एक जो flower है उसमें एक या एक से ज़्यादा carpels हो सकते हैं. They may be free or fused, that we'll discuss later on. The free occurring units of gynoecium is called pistil, that we have already discussed. जो single unit है gynoecium की, उसे pistil कहा जाता है और carpel कहा जाता है. And this is the carpel. It represents it is made up of three parts. तीन parts से बना होता है. One is the basal portion, जो flask shaped portion है, जिसे कहा जाता है ovary. It bears ovules जो future के seeds बनाते हैं, and this ovary will give rise to the fruit after maturity. Then comes the elongated portion, जिसे कहा जाता है style, and at its tip it bears the stigma, which helps in receiving the pollen grains. And the pistil is a flask-shaped structure. जो pistil है एक carpel है. It is a flask-shaped structure. It has basal swollen ovary, a stalk-like style, and a terminal receptive part, जिसे कहा जाता है stigma. So इन तीन part से मिलके बनती है एक carpel और pistil. So this is the compound pistil, differentiated into three parts: stigma, style, and ovary. And inside ovary it bears the ovules. Ovary has one or more chambers. जो ovary है उसमें एक या एक से ज़्यादा chambers होते हैं, और उन्हें कहा जाता है locule. Locule is the singular, loculus is the singular word, and loculi is the plural. Means एक से ज़्यादा जब chambers present होंगे, then we use the term loculi. Unilocular ovary is found in case of P. For example, in this is the animated photograph diagram of unilocular ovary. एक single chamber present होगा, उसके अंदर present होता है ovule. Then comes bilocular ovary. It is found in case of mustard. Bilocule means having two chambers separated by one septa, जिसमें दो compartments होंगे. इस तरह की ovary को bilocular बोलेंगे. And trilocular means having three chambers, that we can see in this diagram. Trilocular ovary, it is found in case of asparagus. And tetralocular means having four chambers, found in case of Ocimum sanctum. And pentalocular ovary, it is found in case of China rose. Then comes multilocular ovary, which is found in case of Althea, having more than 5 chambers or locules. So this is the photograph which shows multilocular ovary, having many loculi or chambers, which bears ovule. In chambers, there are present oval outgrowths, जिन्हें कहा जाता है ovules. They are attached to the flattened cushion-like placenta, और ये अटैच होते हैं ओवरी की वॉल के साथ थ्रू अ cushion-like structure, जिसे कहा जाता है placenta. And this is the ovule. It will form the future seed. So we can say that ripened ovule is the seed. जो ripened ovule है उसे seed कहा जाता है. Ovules later mature into seeds, while the wall of ovary forms a covering, जिसे कहा जाता है pericarp. So wall of ovary बनाता है covering, जिसे कहा जाता है pericarp.
and this ovary wall will give rise to the future fruit wall, which is known as pericarp, and it bears a seed inside it. The two together, that is ovule as well as the ovary wall, they combine to form the fruit. So fruit is basically a ripened ovary. A sterile and underdeveloped pistil is called petaloid. जो sterile और undeveloped pistil है उसे petaloid कहा जाता है. As we have studied in case of stamens, we use the term staminode. So in this case, we use the term petaloid. It is the sterile or undeveloped pistil. Gynoecium having single carpel is termed as monocarpellary. Having two carpels termed as bicarpellary. Having three carpels termed as tricarpellary. And having many carpels is termed as polycarpellary, means having many carpels. So these are some terms which are used for Gynoecium. So this animated diagram shows that ovary develops into fruit. So we can say that ripened ovary is fruit and ripened ovule is seed. Next, carpels may be free. If carpels are free, they are called, we use the term apocarpous condition. For example, in case of polycarpellary, apocarpous condition in case of rose, lotus and ranunculus. So in these plants, जो carpels हैं वो free होते हैं, they are not fused with each other. Or they may be fused. If they are fused, then we use the term syncarpous. Syncarpous condition, when the carpels are fused. So they are compound like bicarpellary syncarpous condition. It is found in case of mustard and petunia. And tricarpellary syncarpous condition means three carpels हैं, they are fused together. It is found in case of asphodilus. And polycarpellary syncarpous condition means having many carpels which are fused together in case of althea. So this is the photograph which shows apocarpous Gynoecium. It means जो carpels हैं वो एक दूसरे के साथ fuse नहीं है, they are free, and this is known as apocarpous Gynoecium. When they are fused, then we use the term syncarpous pistil or syncarpous carpels. Fusion may occur in the region of ovaries only. जो fusion है वो सिर्फ ovary का region में हो सकता है, and styles, ovaries and style के बीच में हो सकता है. For example, in case of shoe flower and China rose, or ovaries, style and stigmas, तीनों structures जो तीनों structures हैं carpels के, that is stigma, style and ovary, तीनों ही structure fuse हो सकते हैं. For example, in case of petunia. So it shows different degrees of fusion in case of carpels. Next comes placentation. So what is placentation? It is the arrangement of ovules on the wall of ovary with the help of cushion-like parenchymal structure, which is known as placenta. And this phenomenon of arrangement of ovules through placenta on the ovary wall is known as placentation. So placenta is a parenchymatous cushion. जो placenta है जिसके थ्रू ये ovary wall पे attach होते हैं ovules, उसे कहा जाता है placenta. It's a parenchymatous cushion present inside the ovary where ovules are born, जिसके ऊपर ovules born होते हैं. An ovary may have one or more placenta. एक ovary के अंदर एक या एक से ज़्यादा placenta present हो सकते हैं. The number of position and arrangement or distribution of placenta inside an ovary is known as placentation. So this arrangement of ovules inside the ovary is known as placentation. For example, this is the photograph of P, which shows the arrangement of these structures which are known as ovules, or ये जो cushion-like structure which is made of parenchyma, this is known as placenta. So through the arrangement, arrangement of these ovules with the help of this placenta is known as placentation. It is of following types. First one is marginal placentation. इसमें जो ovules present होते हैं, they are present at the margins. For example, in case of P, so this is the ovary. इसके जो margin suture होता है, जो pod है उसका margin suture है, वहाँ पे present होते हैं ovules. And this type of placentation is known as marginal placentation. One or two alternate rows of ovules occur along the ridge. This is the ridge in the wall of the ovary in an area of fusion of its two margins or ventral suture भी सिखाया था. And this type of placentation is known as marginal placentation. A true placenta is believed to be absent. इसमें जो true placenta है वो absent होता है, ऐसा माना जाता है. Ovaries unilocular, एक ही chamber होता है इस ovary में. Marginal placentation is found in case of monocarpellary pistils of leguminosae members. जो leguminosae के members हैं means Fabaceae के members हैं. For example, P, Acacia, Acacia.
इनमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है. देयर आर सम अदर प्लांट्स लाइक लार्कस्पर, दैट इज अ डेल्फिनियम, इसमें भी मार्जिनल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है. सो दिस इज द डायग्राम विच शोज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. दिस इज द वेंट्रल सूटर. यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लासेंटा और ये ओव्यूल्स हैं, इसमें अटैच होते हैं ये. एंड दिस इज द लोक्यूल. इट इज अ सिंगल लोक्यूल, सिंगल चैम्बर मोनोकार्पलरी ओवरी है. और यहाँ पे प्लासेंटा अटैच होते हैं. व्हेन वी कट इट्स क्रॉस सेक्शन देन वी कैन सी एक सिंगल ओव्यूल हमें दिखता है. And this type of placentation is known as marginal placentation. Next type of placentation is parietal placentation. In this type of placentation, the ovule arise from the peripheral wall of ovary. Two or more longitudinal placentae develop along the wall of syncarpous compound pistil. दो या दो से ज़्यादा longitudinal placentae develop होते हैं along the wall of syncarpous ovary from compound pistil. The number of placentae correspond to the number of fusing carpel. जितने placentae present होते हैं उतने ही number of carpels present होते हैं, fused carpels. For example, 2 in case of Fumaria, 3 in case of Viola, and 4 in case of Caparis. The ovary is usually unilocular. जो ovary होती है एक ही chambered होती है, but modification occurs in many. But कुछ एक में modifications हो जाती हैं और it results in the formation of more than one chamber. In polycarpillary syncarpous pistil of poppy and archimon, the ovule-bearing placenta grow inwardly to form incomplete septa. इसमें जो placenta होते हैं वो ग्रो करते हैं इनवर्डली, जिससे कि इनकम्प्लीट सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन केस ऑफ पॉपी एंड आर्जिमोन. और इसमें जो कार्पल्स होते हैं दे आर पॉलीकार्पली, मीन्स मोर देन 5 कार्पल्स आर प्रेजेंट और फ्यूज्ड होते हैं वो. A false septum, जिसे कहा जाता है रेपलम, which is the unique feature of members of family Brassicaceae or Cruciferi, called replum, dwells between the two parietal placentae. दो parietal placentae के बीच में एक false septum बनता है जिसे रेपलम कहा जाता है in the mustard. So this is the section of ovary which shows this compartment-like structure. It is known as replum और ये characteristic feature है family Brassicaceae का. जो दो पैराइटल ओव्यूल्स हैं उनके बीच में एक कंपार्टमेंट बनता है फॉल्स सेप्टम, जिसे रेपलम कहा जाता है. एंड इज द यूनिक फीचर ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी. द ओवरी बिकम्स बायोलॉक्यूलर. इसकी वजह से जो ओवरी है वो बायोलॉक्यूलर बन जाती है, मीन्स 2 चैम्बर्ड ओवरी बन जाती है. इन द ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ कुकुरबिट्स, द 3 placenta grows inwardly to meet the center and then bend outwardly. जो कुकुरबिट्स होते हैं उसमें 3 placenta ग्रो करते हैं इनवर्डली एंड मीट इन द सेंटर में मीट करते हैं एक दूसरे से इन द सेंटर एंड देन बेंड आउटवर्डली एंड फाइनली बेंड आउटवर्डली एंड द ओवरी देयरफॉर बिकम्स ट्राइलोकुलर. इसकी वजह से जो ओवरी है वो 3 चैम्बर्ड हमें विजिबल होती है. दिस इज द फीचर ऑफ कुकुरबिट. नेक्स्ट कम्स एक्साइल प्लेसेंटेशन. एज द नेम इंडिकेट, इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच होते हैं प्लासेंटा के साथ थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द ओवरी. सो दिस इज द सेंट्रल एक्सिस. यहाँ से ओव्यूल्स अराइज होते हैं एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नोन एज एक्साइल प्लेसेंटेशन. इट अकर्स इन syncarpous pistil. जो फ्यूज्ड कार्पल्स होती हैं उन्हीं में एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है. द ओवरी इज पार्टीशनड इनटू 2 और मोर चैम्बर्स. एक से ज़्यादा चैम्बर हो सकते हैं, दो से ज़्यादा चैम्बर्स दैट वी कैन सी. दिस इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन इन केस ऑफ iris luticens. In this we can see here, this is the central axis. इससे अराइज होते हैं प्लासेंटे और ये बियर करते हैं ओव्यूल्स. एंड दिस इज द आउटर वॉल ऑफ ओवरी जिसे कहा जाता है पेरिकार्प. सो प्लासेंटे occur in the central region where the septa meets. प्लासेंटा वहाँ से ग्रो करते हैं जहाँ पे सेप्टम और कंपार्टमेंट्स मिलते हैं सेंटर में. वहाँ से प्लासेंटा अराइज होते हैं एंड दे बियर द ओव्यूल. That an axial column bearing ovule is formed, जिसकी वजह से axial column bearing ovule बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पेटूनिया जिसमें कि बायोलॉक्यूलर ओवरी होती है, and asphodilus which bears trilocular ovary, then tomato bilocular or tetralocular ovary, then shoe flower which bear pentalocular ovary, althea it bear multilocular ovary, and lemon it also bear multilocular ovary. And it shows axial placentation that we can see in this photograph. This is the section of lemon fruit, and the term used for lemon fruit is hesperidum.
हेस्प्रेडियम टर्म यूज़ करते हैं लेमन फ्रूट के लिए। जब हम इसका सेक्शन काटते हैं सो वी कैन सी हियर, यहाँ पे मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है एंड यहाँ सेंट्रल एक्सिस वहाँ से सीड्स अराइज होते हैं, ओव्यूल्स अराइज होते हैं, दे विल फॉर्म द सीड। देन दिस इज द टोमेटो विच बियर्स बाइलॉक्यूलर ओवरी, 2 चैम्बर्ड या फिर 4 चैम्बर्ड ओवरी प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ टोमेटो। एंड दिस इज द कैप्सिकम, इट बियर्स ट्राइलॉक्यूलर ओवरी, इसमें भी ओव्यूल्स अराइज होते हैं सेंट्रल एक्सिस से। And this type of placentation is known as axial placentation. Next comes basal placentation. It is the characteristic feature of family Asteraceae. इसमें जो ओवरी है उसके बेस से एक सिंगल ओव्यूल अराइज होता है and this type of placentation is known as basal placentation. The pistil can be monocarpellary. इसमें monocarpellary pistil होता है, मीन सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है, और मे बी syncarpus, दो से ज़्यादा कार्पल्स होंगे बट दे आर फ्यूज्ड. The ovary is unilocular, means single chambered ovary है. It bears a single placenta at the base with generally single ovule. एक ही placenta present होता है और एक ही उसके ऊपर ovule लगा था. For example, in case of ranunculus, sunflower, and marigold. So these are some examples which bear basal placentation. Next comes the superior and inferior ovaries. Superior ovary is said to be superior when all the floral organs arise from the base of ovary and they are not in direct contact with ovary. This first diagram shows that the floral organs like sepals, petals, and stamens, they arise from the base of ovary and they are not in direct contact with ovary. This type of flower is known as Hypogenius flower. Hypo means below or lower. Gynous means ovary. When all the floral organs arise from the base of ovary and without any direct contact, that type of flower is known as hypogynous flower, and the condition of ovary is superior. This type of ovary is said to be superior ovary. In case of inferior ovary, all the floral organs arise from the tip of ovary, or we can say above the surface of ovary, that we can see in this diagram. This type of flower is known as epigynous flower. When epi means upon, gynous means female reproductive structure. When the floral organs arise from the tip of ovary, that we can see in this diagram. So that type of flower is said to be epigynous flower, and the condition of ovary is inferior. This type of ovary is said to be inferior ovary. The ovary is termed as superior when the other floral organs are not in contact with the ovary. When the floral organs are not in contact with ovary and they arise from the base of ovary, that ovary is said to be superior. If the ovary is fused with the thalamus so that sepal, petals, and stamens arise from its top, like the style, the condition is called inferior, and the ovary is said to be inferior. So there are 3 forms of thalamus with respect to the floral organs and position of ovary. First one is hypogyny, means this first flower, जब floral organs ovary के base से arise होते हैं, below the surface of ovary, that condition is known as hypogyny. Perigyny means when the floral organ arise from the rim of a thalamus. जो thalamus है that forms a cup-like structure or disc-like structure, उसके rim से arise होते हैं floral parts. So that type of ovary is said to be, that type of flower is said to be perigynous flower, and condition is known as perigyny. Then third one is epigyny, that we have already discussed, when the floral organs rise from the top of ovary. The next, superior ovary, that we have already discussed. For example, lily, sepal, petal, stamens are attached below the ovary and they are not in direct contact with ovary. Inferior ovary, when the floral parts like sepal, petal, stamens are attached near the top of ovary. So on the basis of that, we can say the flower is hypogynous flower, in which the floral organ arises from the base of ovary and the ovary is superior. In epigynous flower, floral organ arises from the top of ovary and the condition of ovary is inferior. In perigynous flower, the floral organ arises from the rim of thalamus, from the peripheral region, and in this case ovary is half inferior and half superior. The first condition is hypogyny. As the name indicates, hypo means lower, gyne means the female reproductive structure, that is ovary. When the floral parts arise from the base of ovary
So that condition is known as Hypogynous flower. In this case, ovary is said to be superior and other floral parts are inferior. So in this case, thalamus is convex or conical. जो thalamus है convex और conical shape का होता है. जो gynoecium और ovary है that develops at its top. Thalamus के top में grow करता है ovary, while stamen, petals and sepals are born successively below. Ovary के base से arise होते हैं सभी के सभी floral parts which are sepal, petal and stamens. The ovary is said to be superior. इस condition में ovary को superior कहते हैं and other floral organs are inferior that I have already discussed. A flower having hypogyny is called hypogynous flower. For example, we have ranunculus, mustard, petunia, shoe flower, China rose, that is hibiscus, rosa sinensis, brinjal. This is the flower brassica, which shows hypogynous condition. In this condition, all the floral parts arise from the base of ovary, and the condition of ovary is said to be superior. Next comes perigyny. In this condition, the floral organs arise from the peripheral region of the thalamus. So the periphery of the thalamus grows into a degree of form, varying degree of forms, to form an expanded structure called hypanthium. जो thalamus है वो एक expanded structure बनाता है, that may be cup-like, disc-like structure, जिसे hypanthium कहा जाता है. और जो floral organs है, they arise from the edges of this hypanthium. And this type of flower is said to be perigynous flower. So in this diagram you can see here जो thalamus है ये form करता है cup-like structure और disc-like structure, और जो floral organs हैं वो इसके edge से arise होते हैं. And this type of flower is said to be perigynous flower. And this flower we can see here जो cup-like structure है उसे कहा जाता है hypanthium, और ovary इस cup में inserted होती है, और जो floral organs है वो thalamus के edges से arise होते हैं. And this cup-like structure which is formed by modification of thalamus is said to be hypanthium. Next, perigynous thalamus is of 3 subtypes. जो perigynous thalamus होता है वो 3 different तरह का है. First one is disc shaped. Thalamus is flat disc-like. इस केस में जो thalamus होता है flat disc-like होता है, and it is found in case of pea flower. इसमें जो thalamus होता है it is disc-like, और जो floral organs है वो इसके margin से arise होते हैं, except carpel जो कि center से arise होता है thalamus के. So the gynoecium lies in the center. जो gynoecium है that lies in the center, and all other floral parts occur on the periphery, but at the same level. But जो level होता है, height होती है सबकी same होती है. For example, in case of pea and cassia, this type of flower bears disc-shaped thalamus. And ovary is considered to be superior. Some workers consider it as half superior and half inferior. Next type of thalamus is cup-shaped thalamus. Here the margin of thalamus is turned upwardly to form a cup or saucer-like structure. For example, in this case, जो thalamus है वो grow करता है turned out upwardly and form this cup-like structure. और जो floral parts हैं वो इसके margin से arise होते हैं, thalamus के margin से floral parts arise होते हैं. Gynoecium grows from the bottom. जो gynoecium है वो इसके bottom से grow करता है thalamus के of the cup, while the remaining floral organs are born at the rim or edge of the thalamus. It is found in case of prunus, that is plum or peach. इनके flowers में जो condition होती है thalamus की, that is cup shaped, और it is perigynous flower. Next, third type is flask-shaped perigynous flower. In this, margin of thalamus grows upwardly to produce a hollow flask-shaped structure in which gynoecium lies at its bottom and remaining floral parts are at its mouth of the flask. जो thalamus है वो एक flask की तरह structure बनाता है, और जो gynoecium है that arise from the base of that flask, और जो remaining floral parts हैं वो इसके edges से, tip वाले edges से grow करते हैं from the tip of flask. And this type of thalamus is found in case of rose. So in this case we can see here जो thalamus है it forms a flask-like structure. जो ovary है वो इसके base से arise होती है, और जो floral parts हैं remaining they arise from the apex of this flask or mouth of this flask. जो petals हैं, sepals हैं और stamens हैं वो इसके rim से, mouth के rim से arise होते हैं. For example, in case of rose. In both cup-shaped and flask-shaped gynoecium or ovary is described as half inferior, while the remaining floral parts are said to be half superior. So जो cup-shaped और
फ्लास्क शेप थैलेमस वाले पेरिगाइनस फ्लावर हैं उनमें ओवरी कंडीशन को हाफ इन्फीरियर माना जाता है, और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज अ हाफ सुपीरियर, बट सम वर्कर्स प्रेफर टू डिस्क्राइब द ओवरी ऑफ सच फ्लावर्स एज फुली सुपीरियर। कुछ वर्कर्स इसको फुली सुपीरियर मानते हैं। नेक्स्ट इज द थर्ड कैटेगरी, दैट इज एपिगाइनी। एज द नेम इंडिकेट, इसमें जो फ्लोरल पार्ट्स हैं दे अराइज फ्रॉम द टॉप ऑफ ओवरी, ओवरी के टिप से अराइज होते हैं। द थैलेमस इज होलोड आउट इन द फॉर्म ऑफ फ्लास्क, बट इट्स इंटरनल वॉल इज फ्यूज्ड विद ओवरी। जो थैलेमस है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हॉलो कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ओवरी एम्बेडेड होती है एंड इट्स वॉल इज फ्यूज्ड विद द थैलेमस। Only the style and stigma of the pistil are observable from upper side. सिर्फ स्टाइल और जो स्टिग्मा है वही हमें अपर साइड से दिखते हैं। The other floral organs are born at the top of ovary, और जो other floral parts like sepals, petals and stamens वो ovary के tip से arise होते हैं। The flower having epigyny are called Hypogenius Flower, and condition of ovary is inferior ovary that we can see in this photograph. इसमें जो फ्लोरल ऑर्गन्स हैं वो ओवरी के टिप से राइज होते हैं, दैट इज पेटल, सेपल और स्टेमन्स, और इस तरह के फ्लावर को कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर। द ओवरी ऑफ और द gynoecium is said to be inferior while other floral organs are called superior, and this type of flower is found in case of apple, sunflower, cucumber, guava. So this is the LS of apple flower, which shows Hypogenius condition, and this flower thalamus forms a cup like structure, और जो ओवरी है वो एम्बेडेड होती है इस फ्लास्क और कप लाइक स्ट्रक्चर में, और जो फ्लोरल ऑर्गन्स हैं वो इसके टिप से, ओवरी के टिप से अराइज होते हैं, एंथर्स एज वेल एज सेपल्स एंड पेटल्स, एंड दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज सेड टू बी एपिगाइनस फ्लावर, एंड द कंडीशन ऑफ ओवरी इज inferior and other floral parts. Next comes last one, that is the function of flowers. So what are the various function of flowers? As we know, flower is a modified shoot, and it is specialized to perform the function of sexual reproduction. So this is one important function. Sexual reproduction में help करता है in case of angiosperms. It possesses colored petals or corolla, which helps in attracting the pollinating agents. Flower often possesses edible pollen grains. Some flowers pollen grains are edible or nectaries for feeding the visiting pollinator, जिससे जो pollinators हैं flower को visit करते हैं and they helps in pollination. It has a covering of green calyx or sepals, which provide protection or support to the internal delicate parts during the bud condition. Stigma part of pistil is specialized to receive the pollen grains, and only compatible pollen grains are allowed to germinate on the surface of stigma. There is an internal system of providing nourishment to the growing pollen tube in the flower. It provides nourishment and protection to the young growing fruit. So these are some important functions of flower. This was all about for our today's discussion. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.